अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक है? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सब लोग अच्छे से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? और बताइए क्या हो रहा है? किसी ने क्या चीज क्लास रटा ना, तंग आ गया होगा आप भी। आई डोंट लाइक टेकिंग क्लासेस सच लेट आल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली क्या करूं। सो यस्टरडे तक हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में। हमने पढ़ा था जनरेटर फंक्शंस के बारे में। हमने पढ़ा था लैम्डा फंक्शंस के बारे में। आज हम फंक्शंस की ही एक प्रॉपर्टी को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको स्कोप कहते हैं। विल टॉक अबाउट स्कोप ऑफ अ वेरिएबल एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोप बिकम्स इंपॉर्टेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ फंक्शन। स्कोप का मतलब होता है कि एक फंक्शन, मान लीजिए एक फंक्शन हमने डिफाइन की डेफ माई फंक्शन, ठीक। और इसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स, उसमें से 100 डाला। नाउ दिस फंक्शन इज डूइंग समथिंग टू एक्स एंड वगैरह वगैरह something. Now, can we print this x outside the function? Is it possible to print this x outside this function? सवाल ये है, क्या ये x जो कि एक फंक्शन के अंदर डिफाइन है, क्या इसको फंक्शन के बाहर एक्सेस करना मुमकिन है? ठीक। And similarly, if we have a function, we have a variable x is equal to 200, right? And we want to, we have another function, say -2. We want to print this x inside the function. Now, this is a variable that is defined outside the function, and we want to print it inside the function. So, is it possible? Which of the two things is possible? इन दो में से क्या possible? Let's try to run and see. इसको run करके देखते हैं. It gives us an error. It tells us x is not defined. ये ऐसे बात कर रहा है जैसे कि ये है ही नहीं. अगर मैं ऐसे भी लिखूं print x, it will tell me x is not defined. अगर मैं अब फंक्शन के अंदर भी x लिख रहा हूं, it is telling me x is not defined. What about this? ये तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है, मगर प्रिंट भी कुछ नहीं हो रहा है. Let's come back to this in a little while. First, let's talk about this. Why is this x not getting printed? This x is not getting printed because this x here is what is known as a local variable. फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं, फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल बनाए जाते हैं, वो फंक्शन के लोकल होते हैं. वो फंक्शन को अंदर ही पता होते हैं, वो फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते. ठीक. Any function, any variable that is created inside a function cannot be accessed normally outside the function because it is a local variable. Yeah, the scope of the variable is local. इसका स्कोप लोकल है. स्कोप मतलब इसकी पहुंच, ये फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है. फॉर एग्जांपल, I want to use this x in something. Y is equal to x plus 20. Is this a valid statement? Yes, because this x is being used but inside the function. Outside the function नहीं. Inside the function चाहे आप जो मर्जी इस x को करे वो हो जाएगा, लेकिन फंक्शन के बाहर आप इस को कुछ नहीं कर सकते. Similarly, if it is an argument here, say if we have a, the variable is an argument. This argument is also a local variable. A is also local. ये a जो argument है, जो कि पास होके जो भी वैल्यू है इसमें जाता है, this is also local. This will not be accessible outside the function. फंक्शन के बाहर इसको एक्सेस करना मुमकिन नहीं है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? Is it understandable to you?
This Yes. thing? Okay. Let me now do like this. X is equal to 300. ठीक है? F, my F, X, okay, is equal to not, okay, def my X, and X is equal to 100. Let me call my F. नितेश, ये रन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Will this run or not? Yes, sir. Do you think this will run? Yes, sir. Okay, let us try to run this. Okay, it showed us no error. ठीक? If I print X here, what will be printed, Nitesh? What do you think will be printed? 300. X will be printed or 300 or 100? 300. Why X क्यों नहीं print होगा? सर क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है ना. ये X जो है इसका local variable. This X is a different variable than this X. Okay, this X is a variable, but this X is a local variable जिसका मैंने 100 बनाया. So if I print here, local X is so you can see local X is 100 and जो 300 है बाहर वाला. ठीक है? Outer X is fine. What if I don't write this statement? What do you think will be the output? Roll number 9. Roll Yes, number- sir. I have created a function myf. It is printing local X is X, and I'm calling it, and outer X is X. What will be the output? Local X is what and outer X is what? सर लोकल एक्स है जो एक्स जो उसको हमने ये रखा इसको आपने कमेंट की Comment x is equal to 100 कुछ भी नहीं है ये. So ये को ना जानती छुई नहीं है. As good as it is nothing. सर फिर 300 पे प्रिंट होगा. So अभी तो लेकिन हमने कहा कि बाहर का वेरिएबल अंदर एक्सेस नहीं होता है. अभी हमने कहा कि सर वहाँ पे लिखा ना आपने प्रिंट फिर x माय फंक्शन के अंदर फिर आपने यहाँ पे फिर से कॉल की माय फंक्शन और फिर लिखा प्रिंट आउटर x is x. outer X तो ठीक है, इसका कोई मामला नहीं है. How has this function been able to print a variable which is not inside it? ये तो इसके अंदर है ही नहीं ना. बात है. नो सर इसके अंदर नहीं है. So when we try to do the same thing here, not the same thing, the reverse of it, अंदर का हमने जब बाहर प्रिंट करना चाहा नहीं हुआ. This X was internal. We tried to print it outside. It did not allow us. But बाहर का जब हमने अंदर प्रिंट किया हो गया. ठीक है? Yes sir. But don't you find it strange? Now I am writing X is equal to 100. अब अगर चलाएंगे चलेगा. Local X is 100. But outer X is 300. Now it is behaving as if this X is something different. ये नहीं. Roll number 9. Yes sir. ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये X कोई और वेरिएबल है. ये नहीं है. Which is true. ये वेरिएबल ये नहीं है. ये कोई और वेरिएबल. Okay. Roll number 9. Stay tuned. What about this? What will be printed now? Roll number 9. Yes sir. क्या होगा फ्रेंड? लोकल एक्सिस क्या और आउटर एक्सिस क्या? Sir 1 और outer x है. क्या लिखा मैंने? x plus minus plus is equal to 1. इससे क्या होना चाहिए? एक्स में क्या है? सर ये कंटिन्यू नंबर्स होने चाहिए 1 2 3.
x में 300 है, so I am trying to increment it by 1. So तो x, पर वो है ना अलग, okay, एक second. वेट 2 मिनट आप वेट कीजिए। हाँ जी, so what I'm trying to say is now if I try to run this program, it will give me an error that local variable x is referenced before assignment. So what do you think is happening? क्या हो रहा है? शाबाश, रोल नंबर 1, यस सर। क्या हो रहा है? सर आप एरर मैसेज दिखाइए फिर से। एरर मैसेज है local variable x referenced before assignment. It is telling me एक कशर पे शामिल error मतलब तो जो access increment करान access क्या त्रावने ब्रोंठी access में शीन तो क्या शायद increment करान means that it means local variable x referenced before assignment. आप इसको कुछ modification कर रहे हैं लेकिन assignment से पहले, इससे पहले कि इसमें कुछ हो, लेकिन इससे पहले इसमें तो 300 है। यस सर। So now there is a conundrum, एक तरह से एक प्रॉब्लम है कि बाहर का वेरिएबल अगर मैं अंदर प्रिंट कराना चाहूं वो हो जाता है। जैसे आप देखिए, बाहर का वेरिएबल अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूं वो नहीं हो रहा है। बाहर का वेरिएबल के ही नाम का अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूं बाहर का वेरिएबल लेकिन असाइनमेंट करके वो नहीं हो रहा है, वो अंदर अपना एक सेपरेट वेरिएबल बना रहा है x, क्योंकि अगर बाहर का वेरिएबल भी मॉडिफाई होता तो आउटर x 300 नहीं होता। ठीक, यस सर। सो इन तीनों बातों से क्या पता चलता है? पहली बात कि बाहर का वेरिएबल प्रिंट हो जाता है, दूसरी बात बाहर का वेरिएबल मॉडिफाई नहीं होता, तीसरी बात अगर बाहर के वेरिएबल कैसे नाम वाला ही एक लोकल वेरिएबल रखते हैं तो वो एक अलग वेरिएबल बन जाता है, बाहर का वेरिएबल सेपरेट, अंदर का वेरिएबल सेपरेट। इसका क्या मतलब है? शाबाश, ये अलग अलग था, ये एक्स को ये इसको मानता है, ये वाला एक्स दूसरा है और वो दूसरा है। लेकिन अलग अलग। अगर ऐसे किया तब कैसे वो वाला ऊपर वाला लेता है? सर वही है ना, वही कंफ्यूजिंग है इसमें। हाँ ठीक, क्योंकि इससे पहले अगर हमने बात की थी एक वेरिएबल जो अंदर होता है वो बाहर प्रिंट नहीं होता है बिकॉज इट इज लोकल। एक बाहर वाला वेरिएबल इज कॉल्ड अ ग्लोबल, इट इज ग्लोबल। एक वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर होता है वो किसी भी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है। यूज का मतलब है रीड। ग्लोबल कैन बी read inside any function, ये ग्लोबल बन जाता है। ग्लोबल मतलब ये इसको भी मिलेगा, अगर मेरे पास एक दूसरी फंक्शन है myf2 वो भी इसको यूज कर सकता है। ठीक है, प्रिंट myf2 ग्लोबल इज, वो भी इसको प्रिंट कर सकता है। इस x को सारे के सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। इस ग्लोबल को सारे के सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे मॉडिफाई का मतलब है ये, ठीक, दिस इज मॉडिफिकेशन। व्हेनेवर आई ट्राई मॉडिफिकेशन इट टेल्स मी नहीं भाई आप लोकल वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसको हम मॉडिफाई क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जब हम इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं द पाइथन थिंक्स इट इज अ लोकल वेरिएबल। पाइथन को लगता है ये मॉडिफाई जो मैं करने की कोशिश कर रही है, फंक्शन जो मॉडिफाई कर रही है ये लोकल है।
अब पाइथन सोच रहा है अगर ये लोकल है ये इनिशियलाइज का इनिशियलाइज अथ क्या बतेल इक्वल टू 2 करान ये गो ना गो इनिशियलाइज गम पाइथन बसान अत ग x इक्वल टू 3 पे ठीक 3 प्लस इक्वल टू 2 गो 5 मगर यह इनिशियलाइज गम कुछ जाए अगर पाइथन सोचा यह लोकल हालांकि मोन मतलब लोकल मेरा मतलब है इट इज ग्लोबल इट इज हियर I want this increment to happen, it should become 302. But Python thinks it's local and it tells me, it gives an error here कि local variable को आप इस्तेमाल कुछ change करने की कोशिश कर रहे हैं before कि उसमें कुछ डाला हो आपने, before उसमें कुछ आपने assign किया हो, ऐसा मुमकिन नहीं है. So for that I need to tell Python कि नहीं भाई ये global है. I need to tell Python that it is global like this. जिस function में मैं इसको modify करना चाहता हूँ, in whichever function I need to modify this global variable, I need to inform this function that जिस x को मैं modify कर रहा हूँ भाई ये आपका local नहीं है ये global है ठीक so इसको बाहर ढूंढो इस modification को बाहर ढूंढो I write this global x now this does not become a local variable this informs the function this informs Python that x इस function में जहां जहां use होगा वो आपका अपना कोई local x नहीं है कोई ये वाला बाहर कोई x मिलेगा आपको. So now if I try to run the same program, no error. It is telling me local x is 302 and outer x is also 302. क्यों outer x क्यों 302 हो गया अनुमान? आउटर भी होगा ना क्योंकि x इज इक्वल टू 300 वो आउटर है यहाँ पे ग्लोबल है. बिल्कुल इसने चेंज जो की वो इसने ग्लोबल वेरिएबल पर चेंज की ठीक है ये सर अगर हम उसकी जगह x की जगह सर लिस्ट देंगे वो अपेंड होगा फिर अपेंड होगा लिस्ट में. अच्छा सवाल है से we have a list my list is equal to 2 3 4 and suppose f2 में इसको करते हैं say we want to say this is global my list and we say my list dot append say 800 ठीक है so you want to see whether it will be outside or not huh? Print outer my list is my list इससे पहले हम इसको कॉल करेंगे my f2 so that ये हो जाए let us run and if you can see it is getting modified append हो रहा है अगर हम ये नहीं करते so इसने लिस्ट को एक्चुअली मॉडिफाई ये तो तब भी append हो रहा है यस सर हो रहा है शायद ये होता है. ओके मे बी जो फंक्शंस यूज हो रेफरेंसिंग फंक्शंस के लिए यूज होती हो ना कि मतलब मेरे ख्याल से ये अगर ये ऑपरेट लेट अस ट्राई टू डू अ स्ट्रिंग लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन अ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू हेलो सो लेट्स राइट हियर नेम डॉट reverse how do we reverse a string in Python reverse slice करके txt is equal to ऐसे स्लाइस करके ऐसे करके या स्लाइस करके फंक्शन भी है ना क्योंकि नहीं रिवर्स फंक्शन नहीं है कोई स्ट्रिंग की इज देयर एनी स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन इन शॉर्ट रिवर्स definition defined रिवर्स फंक्शन है कोई स्ट्रिंग की नो सर हमें वैसे ही करना पड़ता है उसे अलग अलग करना पड़ता है जैसे तो रिवर्स पे तो चलेगा नहीं सो लिस्ट हो रहा है आई थिंक दिस विल बी
सर वो हो रहा है बैटरी डेड हो गई सर की, लीव करो।